लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सुबह की अच्छी शुरुआत कैसे की जाए. What is the best way to begin your day so that you get the most out of your day and your day is more productive? Now, this solo podcast series is not to preach you anything. मैं आपको यहाँ कोई ज्ञान देने की कोशिश नहीं कर रही हूँ क्योंकि YouTube पर या और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है ऑलरेडी. This is not about that. This is about sharing some absolutely practical insights, experiences, and the life lessons that I have learned along my journey of transformation. So let's start with tip number one. Number one tip is to wake up early. I know we are tired of listening it. हम बचपन से सुन रहे हैं अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से, एल्डर्स से कि जल्दी उठो. सुबह जल्दी उठने के बहुत बहुत सारे फ़ायदे हैं. अगर आप अपने आप के साथ सुबह 1 से 2 घंटे स्पेंड करें तो आप इतनी सारी चीज़ें इन 2 घंटों में कर सकते हैं. दैट विल सेट यू अप फॉर द एंटायर डे एंड फॉर योर लाइफ, क्योंकि आप इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशनल हैबिट्स और रूटीन इन 2 घंटों में बना सकते हैं. दैट इज़ गोइंग टू बी proving worthy and helpful in uplifting a lot of areas of your life. If we wake up early in the morning and give ourselves 1 to 2 hours, then these couple of hours can transform so much in our life and it can significantly impact so many areas of our life that it is just unbelievable. तो पहला obvious question ये आता है कि what is the ideal time to wake up? Now, if I speak from the wisdom of Vedas and what a lot of successful people recommend, the best time to wake up is in Brahma Muhurta, that is between 3:30, 4 a.m. to 6 a.m., couple of hours before the sunrise. Now, इसके बहुत सारे benefits हैं क्योंकि इस टाइम सारा वर्ल्ड सो रहा होता है. You can have a better sense of focus, you wake up with no rush in your mind, you can do a lot of things in this time period. Now, this is ideally speaking, लेकिन हमारी लाइफ क्या आइडियल चल रही है? नहीं, राइट? सो क्या करें फिर? हमारे पास बहुत सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं. जैसे सम ऑफ अस आर इनटू द जॉब्स दैट keep us awake in the night for late hours. Some of you could be new moms who are nursing their babies. Some of you could be in a living situation with your roommates and the people you live with that you're not able to sleep early on time. तो फिर जल्दी कैसे उठेंगे? It is absolutely impractical, right? इनफैक्ट आपको अपने आप को फोर्स नहीं करना चाहिए बहुत जल्दी उठने के लिए अगर आप लेट सो रहे हैं, क्योंकि अच्छी नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ योर वेल बींग. सो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप. बट वॉट यू कैन डू राइट नाउ इज बिल्ड अ हैबिट ऑफ वेकिंग अप एटलीस्ट 30 मिनट्स फ्रॉम द टाइम दैट यू वेक अप. तो अगर आप सुबह 8 बजे उठते हैं तो प्लीज़ ट्राई टू वेक अप एट 7:30 एंड जस्ट do this for a couple of weeks so that your body registers this as your new time. Build that mind-body connection by waking up just 30 minutes before for a couple of weeks or 3 weeks. After these 3 weeks, try waking up another half an hour early. इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा टाइम ना over a period of 2 to 3 months आप 1 से 1.5 घंटा पहले उठने लग जाएंगे. इस जर्नी में अपनी बॉडी और माइंड को साथ साथ रखना बहुत ज़रूरी है. तो इसीलिए अचानक से अपना स्केड्यूल चेंज करने की जगह सिर्फ आप आधा घंटा करके प्रोग्रेस कीजिए स्लोली और 2 से 3 महीने में कोशिश कीजिए कि आप जितने भी बजे उठते हैं उससे थोड़ा सा 1 से 1.5 घंटा पहले उठ पाएं. दैट विल बी माई प्रैक्टिकल टिप फॉर यू टू मेक इट अ लाइफस्टाइल फॉर योरसेल्फ एंड नॉट जस्ट अ चैलेंज दैट यू आर टेकिंग अप फॉर अ मंथ और सो. ये कोई मॉर्निंग उठने का चैलेंज नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है. तो इसको एक लाइफस्टाइल की तरह ही स्लोली धीरे धीरे बिल्ड करना पड़ेगा. अच्छा, अब आप जल्दी उठ जाएंगे तो करेंगे क्या उस टाइम में? उसके लिए मेरे अगले कुछ टिप्स हैं. सेकेंड टिप इज टू हाइड्रेट योर सेल्फ. नाउ व्हेन वी वेक अप आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ स्लीप, naturally our body is dehydrated. A great way to start your morning would be having a glass or 2 of lukewarm water. You can have simple plain water, or you could add mild spices to it. Cinnamon water, cumin seeds, fenugreek, moringa, wheatgrass, lemongrass, black pepper, cloves. The options are literally endless. Having a glass or 2 of this water will help you not just hydrate your body, but also cleanse your gut and also kick in the metabolism process for you. What I personally like is cumin seeds water. I have a couple of glasses in the morning before starting or doing anything else in my day. Now, these are the 2 tips that you can start your day with. Now, after doing all this, let's go a little internal. Let's go to our inner world and take the journey within. This is very important because our inner world is where our deepest motivation, inspiration and desire come from. So we need to know what our deepest motivation is. जो हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, क्या हम inherently inner world में भी उसके साथ aligned हैं या नहीं हैं, और अगर नहीं है तो कैसे बेहतर aligned हो सकते हैं.
The third tip that I have is digital detox. I cannot emphasize on it enough. Digital detox is the most important thing that you must do when you wake up. You know, आजकल हम अपने सुबह सुबह उठते हैं और सबसे पहली चीज़ हमारा हाथ सीधा फ़ोन की तरफ जाता है, और फ़ोन देखते ही या तो हम टाइम देख के फ़ोन रख के फिर से स्नूज करके सो जाते हैं, या तो फिर हम फ़ोन देखकर अपनी ऐप्स में बिजी हो जाते हैं और इतना सारा प्रेशियस टाइम सिर्फ ऐप्स में रैंडम नोटिफिकेशंस में खो देते हैं. दिस इज़ द वर्स्ट वे टू स्टार्ट योर मॉर्निंग. Having a digital detox or not checking out your phone or engaging with screens in the morning can help you utilize that time in connecting with yourself. Instead of connecting with these notifications and these apps and the outer world, first connect with your own inner self. Keep those screens away and use this morning time to connect with your own self. The best thing to do in your bed, just when you're waking up, instead of checking your phone, would be to take those couple of moments and maybe say a prayer, a gratitude prayer that you're able to wake up today. A lot of people didn't even wake up, you know, and put a smile on your face. Just get ready for the day. Just get warmed up with this beautiful, gooey gratitude wala feeling in your heart. Now let's go to tip number 4. Fourth tip, the next tip, the fourth tip that I have for you is practicing mindfulness. सबसे पहले समझते हैं माइंडफुलनेस होता क्या है, क्योंकि आजकल ये टर्म इतनी पॉपुलर हो गई है कि इसके बहुत सारे लंबे लंबे इलैबोरेटेड डेफिनेशंस और मीनिंग्स हैं. बट माइंडफुलनेस इन सिंपलेस्ट टर्म्स इज बीइंग प्रेजेंट इन द प्रेजेंट मोमेंट. प्रेजेंट मोमेंट में ही प्रेजेंट रहना माइंडफुलनेस है. यू नो, आवर माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड इनटू द फ्यूचर और द पास्ट. कल हमने क्या किया था, किससे मिले थे, क्या रह गया, कौन सा काम पेंडिंग है, किसे कॉल करना है, या फिर नेक्स्ट टास्क फ्यूचर में आज ऑफिस में क्या होने वाला है, उससे हमें क्या बात करनी है, कौन से ईमेल्स भेजने हैं. वी आर इनटू ईदर पास्ट और फ्यूचर. But we have to bring ourselves into the present moment because that is what is really happening right now. So do this right in the morning so that you set a tone for the rest of the day. Now, the easiest way to practice mindfulness is meditation. Now, meditation can be of multiple types. Sitting in silence at one peaceful corner in your house and just tuning into the sound of your breath could be a beautiful way. You can do this for 5 to 10 minutes. If you are not used to doing meditation, then I suggest that please stick to 3 to 5 minutes only for the first 3-4 weeks. Build a habit. I always recommend to build a habit very, very slowly. This is one kind of meditation. If sitting in silence is too much for you, you're lost in your thoughts and you're not able to be present, then another good way would be to do a guided meditation of 3 to 5 minutes. Just be with the instructions, live with the instructions, and just let your mind come to peace on its own. Another way to practice mindfulness is intentional bodily movements. So move your body in a way, in a rhythmic way. You can do a yoga session or just be with your breath and just keep your mind focused on how your body is moving. That is also a beautiful way to connect with the present. Another way to practice mindfulness is practicing gratitude or gratitude journaling, because this practice will bring you in the present moment. Just feel grateful for what you have presently in your hands or with you in your life. Instead of, focusing on the regrets of the past or the worries of the future, all this stress, try to focus on what you really have and feel a deep sense of gratitude from your within. This will transform your inner world. This will bring a positive shift in your perspective on how you see your life. A lot of misery in our life is attracted by our own selves because our mindset is always thinking about either the regrets or the worries or the misery or what's not there in our life. So focus on what you have in your life. So these are just 4 or 5 beautiful ways of practicing mindfulness. Now, this brings me to my next tip. That is tip number 5, physical activity. Doing some focused physical activity right in the morning for 20 to 30 minutes is extremely, extremely important. This could be any activity of your liking. If you like to soak in the morning sun, you can go out on a walk or a jog or a run or cycling. You can go out for swimming. You can do a yoga session at home. You can just do some intentional movements. You can do HIIT, body weight. The options are really endless here also. It is just about setting that intention that you will do those 20 minutes to 30 minutes. And if you can squeeze in more time, nothing like it. Just working on your physical body, sweating it out, releases a lot of endorphins, dopamine, these good hormones that make you feel nice about yourself, that fill you up with positivity.
एंड ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है, जब आप एक्चुअली में ये करेंगे ना, आप 1 महीना करके देखिए, आप खुद के बारे में अलग तरीके से, पॉजिटिव तरीके से फील करना शुरू कर देंगे. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट आई एम सेइंग, दीज आर नॉट टू जस्ट लिसन एंड ट्राइंग टू मेक सेंस आउट ऑफ इट कि क्या ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है. सिर्फ आप करके देखिए. That is going to unlock a lot of beautiful doors for you. Now let's go to the 6th tip. The 6th tip is to take out some learning time in the morning. It could be just 10 to 15 minutes, as little as that, but do take it out. What you can do in this time is you can read a few pages from a book or from a holy scripture. You can listen to some educational videos, some motivational videos, or you can listen to some podcast. Just those 15-20 minutes in the morning to learn and infuse yourself with some wisdom. हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है और अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें हम्बल भी होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि शायद हमें सब कुछ नहीं पता है. देयर इज अ लॉट दैट वी कैन लर्न फ्रॉम अदर्स. सो मेक सम टाइम इन योर लाइफ फॉर दैट लर्निंग, क्योंकि जब तक लर्निंग चलती रहेगी ना, तब तक जिंदगी चलती रहेगी. आई ट्रूली बिलीव दैट. एक पॉपुलर मूवी में वो डायलॉग है कि जब तक संघर्ष है तब तक जीवन है. वो तो ट्रू है ही, लेकिन जब तक लर्निंग है तब तक भी जीवन है. सो लर्निंग को अपने डे का जरूर पार्ट बनाइए. अभी सुनने में ऐसा लगेगा कि व्हाट इज दिस 10 मिनट्स गोइंग टू डू फॉर मी, 10 मिनट में मैं ऐसा क्या ही सीख लूंगी. लेकिन जब आप ये 10, 15, 20 मिनट रोज अपने रूटीन में लेके आएंगे ना, आप खुद देखिएगा कि 1 महीने, 1 साल बाद यू विल नॉट बी द सेम person that you are today. So these are 6 powerful tips and hacks that you can start your morning with. Following these tips will set you up for not just a beautiful day, but a beautiful life. Try to fit in whatever you can. Tailor make it according to yourself. I'm not saying be idealistic. Don't go after the ideal time of a workout, the ideal time of reading, and all of that. Just fit in the best what you can right now. Start with only waking up 30 minutes earlier than you right now do. सिर्फ 30 मिनट पहले उठिए. उन 30 मिनट में आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हैं, अपना लर्निंग कर सकते हैं. सिर्फ 30 मिनट्स पहले उठिए कुछ दिनों तक. कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद 1 घंटा पहले उठना शुरू कीजिए. उसके कुछ दिनों बाद 1.5 घंटा पहले उठना शुरू कीजिए. धीरे धीरे अपनी बॉडी को प्रिपेयर कीजिए सो दैट इट नोज एंड इट लर्न्स दैट यू आर ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म योर मॉर्निंग schedule to a powerful morning ritual. Before ending this episode, I would also like to suggest a few books to you. The first one would be The Miracle Morning, which has some beautiful morning rituals and powerful anecdotes that will help you learn more about your morning. Another book that I'd like to recommend to you is Atomic Habits by James Clear. बहुत ही clear cut, beautiful किताब अपनी आदतों को build करने के बारे में. Another book that I'd like to recommend to you is Own Your Morning. I think it's by Mary Morans. I read it a while ago and it gives you some beautiful insights into having a powerful, beautiful start to your morning. This brings me to the end of this episode. I hope these tips will help you to structure your mornings better, to infuse power into your morning and make that much needed shift in your perspective internally in your inner world by rewiring your life with these beautiful morning rituals. I wish you the best and I'll see you in the next episode.